Hello friends, my name is Asif and this is my YouTube channel Technical Asif. In this session I am going to teach you the generation of computer, the different generation of computer. As some of my students in the comment asking for the same to make a video on generation of computer. So let's start. The first generation computer started from 1940 to 1956 and this generation computer used vacuum tubes as a major piece of टेक्नोलॉजी. कहने का मतलब है जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो हम लोग क्या यूज़ करते थे उस वक्त वैक्यूम ट्यूब्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उस वक्त हम लोग को यही मिला और इसी को हमने यूज़ किया. बट द ड्यू टू द यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स द साइज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वे वेरी लार्ज इन साइज. इतना बड़ा होता था कि इट लॉट्स ऑफ स्पेस इट कंटेन लाइक इन ए रूम. And due to this there are lots of spaces required to store first generation computer. Now we have to learn the examples of first generation computer. As you see on the screen, the first one is ENIAC, the second one is EDVAC, the third one is UNIVAC, the fourth one is IBM 701, the fifth one is IBM 650. Now we have to learn the advantages of first generation computer and disadvantages of first generation computer. The first advantage is at that time it made use of vacuum tubes which are the only electronic component available during those days. मतलब उस वक्त में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारे पास क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स था. उसी से हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को क्रिएट किए थे. एंड द सेकेंड वन इज़ this computer could calculate in millisecond, means whatever the calculation required plus minus into divide that will be done in milliseconds. Now the disadvantages of first generation computer. As you see on the screen, the first generation computer are very big in size and weight was about 30 tons. And the second one is this computer were based on vacuum tubes and these computers were very costly due to vacuum tubes. It could store only a small amount of information due to the presence of magnetic drums. Magnetic drums is used in the first generation computer. As the invention of first generation computer involves vacuum tubes, so another disadvantage that computer was disadvantage of this computer was vacuum tubes require a large cooling system. मतलब अगर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स होते थे तो उसको ठंडा करने में, उसको कूल करने में हम लोगों को एक बहुत समय लगता था. दैट्स वाई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिक्वायर कूलिंग सिस्टम. एंड द सिक्स्थ वन इज़ वेरी लेस वर्क एफिशिएंसी, और वर्क एफिशिएंसी भी बहुत कम था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का. एंड लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज. एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट that question is always asked, what is used in case of input in the first generation computer. Then punch card is used in that era. In that year first generation computers, punch cards are used to take inputs, and large amount of energy consumption is also happen in the first generation computer. Now we have to learn the second generation computer. It will start in the year 1956 and end at 1963. As you see on the screen, instead of vacuum tubes in this generation we use transistor. And due to the use of transistor, the size of the second generation computer is smaller in comparison to first generation computer and become faster in speed and cheaper to build. Now we have to learn some of the examples of second generation computer. The first one is Honeywell 400. The second one is IBM 7094. Third one is CDC 1604. Fourth one is CDC 3600. Fifth one is UNIVAC 1108 and many more. Now we have to learn some advantages and disadvantages of second generation computer. The first advantage of second generation computer is due to the presence of transistors instead of vacuum tubes, the size of electron component decrease. That will reduce the size of computer as comparison to the first generation computer. And in the second generation computer, less energy and not produce as much heat as the फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. और एक सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि एनर्जी कम रिड्यूस होने लगा और प्रोड्यूस जो है हमारा हीट जो प्रोड्यूस होता था वो कम होने लगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. एंड द थर्ड वन इज असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड्स वे आर यूज्ड फॉर इनपुट.
मीन्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और पंच कार्ड का हम लोग यूज़ करने लगे फॉर टेकिंग इनपुट इनटू द कंप्यूटर and cost become low as compared to the first generation computer and gives better speed calculate data in microseconds. फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड में करा था, सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड्स में कैलकुलेशन होने लगा. एंड बेटर पोर्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, मतलब मूवमेंट जो है पोर्टेबिलिटी जो कंप्यूटर को ज़्यादा अच्छा होने लगा इन कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन computer. Now the disadvantage is again that the cooling system was required cooling system because of the use of transistor heat होता था, इसलिए उस टाइम हम लोग को कूलिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट होने लगा था. वन ऑफ द डिसएडवांटेज. एंड द सेकेंड वन इज कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड, हमेशा मेंटेनेंस करते रहना होगा हमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में. एंड द थर्ड वन इज ओनली यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, कुछ स्पेसिफिक काम के लिए ही हम इसको. Now we have to learn the third generation computer which start in the year 1964 and it ends 1971. As you see on the screen, in this generation computers integrated circuits were used in place of transistors. And due to the use of integrated circuit, it reduces the size of computer very much at even more compared to second generation computers, and it makes the computer more faster in comparison to the second generation computer. Let us see some examples of the third generation computer. So the first one is PDP-8, second one is PDP-11, third one is ICL 2900, the fourth one is IBM 360, fifth one is IBM 370, and many more. Now we have to learn the advantages of third generation computer. The first advantage is these computers were cheaper as compared to the second generation computer. Due to the use of integrated circuit, इस जनरेशन का कंप्यूटर क्या हो गया, चीपर हो गया इन कंपैरिजन टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. एंड अगेन द यूज़ ऑफ आईसी मेक द कंप्यूटर वेरी फास्ट एंड रिलायबल. And the third use of IC in the computer provide the small size of the computer, as we already learned. IC not only reduce the size of the computer but it also improves the performance of the computer. जो हम IC थर्ड जनरेशन में यूज़ कर रहे हैं वो साइज को रिड्यूस नहीं किया बल्कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है, एफिशिएंसी होता है, उस सारे को इंक्रीज़ कर दिया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में. And this generation of computer has big storage capacity as comparison to the first generation and second generation computers. And instead of punch cards, mouse and keyboards are used for input. जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेकंड जनरेशन में पढ़े थे कि पंच कार्ड का यूज़ करते थे हम लोग इनपुट के लिए, लेकिन अब हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, माउस एंड कीबोर्ड. यानी अगर आपसे कोई पूछे कि किस जनरेशन में कीबोर्ड और माउस का यूज़ होना स्टार्ट हुआ था तो आप क्या बोलोगे, इट विल स्टार्ट इन द ईयर in the third generation computer. Now we have to learn the disadvantages of third generation computer. IC chips are difficult to maintain. जो हमारा IC चिप होता था उसको मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था थर्ड जनरेशन में. एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IC चिप्स. IC चिप्स बनाने के लिए हम लोग को बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता था. एंड ड्यू टू इंटीग्रेटेड सर्किट्स एयर कंडीशनिंग इज़ रिक्वायर्ड. कंप्यूटर बहुत हीट हो जाता था, उसका जो IC हीट होता था, इसीलिए हम लोग को एयर कंडीशनिंग का रिक्वायर्ड होता था in the third generation computer. Now we have to learn the fourth generation computer which will start in the year 1972 and end at 2010. As you see on the screen, the fourth generation computer took advantage of invention of microprocessor that were more commonly known as CPU. यानी कहने का मतलब है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज़ करने लगा था, माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग आज नोन एज CPU भी बोलते हैं. एंड दिस माइक्रो प्रोसेसर विल बी यूज्ड अलॉन्ग विद द इंटीग्रेटेड सर्किट हेल्प मेक इट पॉसिबल फॉर कंप्यूटर टू फिट इजली ऑन ए डेस्क. और जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का IC के साथ में यूज़ करने लगे तो कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हो गया कि हम लोग उसको ईजिली जो है डेस्क में फिट कर सकते थे. एंड दिस will lead to the introduction of the laptop. Now we have to see some of the examples of the fourth generation computer. The first example is IBM 4341, the second one is DEC10, the third one is Star 1000, the fourth one is PUP11 and many more. Now we have to learn the advantages of fourth generation computer. The first one is
fastest in computation and size get reduced as compared to the previous generation. As we know that in this case हम लोग अब माइक्रो प्रोसेसर का ऐसे ही साथ में यूज़ करने लगे थे, तो साइज क्या हो गया, बहुत रिड्यूस हो गया और कंप्यूटर बिकम वेरी फास्ट एंड हीट जो जनरेट होता था वो बहुत नेग्लिजिबल हो गया ड्यू टू द यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर. द फोर्थ वन इज़ लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड. इससे थर्ड जनरेशन में हमको मेंटेनेंस करना पड़ता था, यहाँ मेंटेनेंस बहुत कम हो गया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में. एंड द फिफ्थ एडवांटेज इज ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर लाइक सी प्लस प्लस जावा जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ईजिली यूज़ करने लगे थे. नाउ वी हैव टू लर्न द डिसएडवांटेजेस ऑफ fourth generation computer. The first one is microprocessor design and fabrication are very complex. जो microprocessor हम लोग यूज़ कर रहे थे एज ए CPU, उन्होंने CPU, उसका डिज़ाइनिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था. एंड एयर कंडीशनिंग इज़ रिक्वायर्ड इन मेनी केसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ IC. और IC जो हमारा प्रेजेंट है अभी भी है माइक्रो प्रोसेसर के साथ, वो हीट हो जाता था, इसीलिए हम लोग को एयर कंडीशनिंग का भी रिक्वायर्ड था है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में. एंड इन द थर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द IC. दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्थ जनरेशन computer. Now we have to learn the fifth generation computer. Fifth generation computer based on artificial intelligence. They are still in development, so there are some applications such as voice recognition that are being used today. The use of parallel processing and superconductors is helping to make artificial intelligence a reality. कहने का मतलब है अभी हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन एंड पैरेलल प्रोसेसिंग का जो यूज़ करते हैं वो हेल्प करता है, सुपर कंडक्टर हेल्प करता है मेक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी. सो वी कैन से दैट गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग सिस्टम इज़ टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जब हम लोग नेचुरल लैंग्वेज जो बोलेंगे उसका रिस्पॉन्ड करे या वो खुद से कंप्यूटर अपने से सीखे या सेल्फ ऑर्गेनाइज हो, दिस इज़ द गोल ऑफ fifth generation computer. Now we have to learn some examples of the fifth generation computer. The first example is desktop, the second one is laptop, the third one is notebook, fourth one is ultrabook, fifth one is Chromebook. Now we have to learn the advantages and disadvantages of fifth generation computer. The first one, it is more reliable and works faster due to the use of IC and microprocessor along this computer become very faster and reliable, and the size of the computer very small in comparison to all previous generation computers, means it is available in different sizes and unique features. And third one is it provides computer with more user friendly interfaces with multimedia features. कुछ नया multimedia features भी हम लोग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में डेवलप कर लिए. Now we have to learn the disadvantages of fifth generation computer. They need very low level languages and they make the human brains dull and dumb. ये human brain को dull और dumb बनाने लगा कौन, fifth generation computers.